Hello dear students, good morning, welcome to my class. This is Dr. Varsha and today we will study cell organelle mitochondria, in which we will focus on discovery, definition, size, shape, number, ultrastructure and functions of mitochondria. So let's start our lecture. Mitochondria were first time observed by Colliker in the year 1850 in stated muscle cells. After that, Fleming observed that they were thread-like structure and called them phyla. And then Altman termed them bioplast and considered them symbiotic bacteria. And the term mitochondria was coined by Benda in the year 1898. So it was observed by first time by Colliker, and the term mitochondria was coined by Benda. Definition: mitochondria are small membrane, double membranous structure and cytoplasmic organelle. They are found in eukaryotic bacteria where cellular respiration is found, and they are the site of cellular respiration, and actually organic acids oxidize in this process and transform their potential energy into chemical energy, and that chemical energy is stored in the bond of ATP. So just because of that, they are also called powerhouse of the cell. Occurrence: they are found in aerobic cells, aerobic eukaryotic cells, and they are totally absent in prokaryotic cells like bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. And mostly mitochondria are found in the active regions like shoot apex, root apex, where the meristematic cells are found, and these cells are continuously dividing cells. Shape, size and number. The number of the mitochondria, size of the mitochondria vary from 0.2 to 1 micron in diameter and 2 to 8 micron long. And in recent study, it is found that in the yeast cell, largest mitochondria is found, and they are branched in shape. And number also vary from 1 to several thousand. One mitochondrion is found in the case of Chlamydomonas, that is an alga, green alga, unicellular alga, and 50,000 mitochondria are found in giant amoeba. Ultrastructure of mitochondria. Mitochondria is double membranous structure. Outermost layer is outer covering and then inner covering, and they are actually consisted of unit membrane, just like phospholipid bilayer, which you have already studied in plasma membrane, fluid mosaic model of plasma membrane. So it is consisted of lipid bilayer in which the globular proteins are embedded, and the mitochondria outer and inner covering are mostly selectively permeable, and the outer membrane is highly permeable as compared to the inner membrane to sucrose, coenzyme A, adenine molecules and other anions and cations. And this is the structure of mitochondria. This one is from your book, and now you can see this red layer, outermost covering, that is outer membrane of mitochondria, and this yellow one is inner membrane of mitochondria, and this is the space which is found between the two membrane. It is called perimitochondrial space, and these are the ribosomes. Granules are found inside it. Now you can see in this picture, this is outer membrane, this one is inner membrane, and this is the structure of enlarged structure of the membrane. This is double phospholayer. It is consisted of phospholipid bilayer,
and this is hydrophilic head towards the outer side. This one is hydrophobic tail towards the inner side, and these are globular proteins. This one is extrinsic protein, which is found towards the periphery side, and this one is intrinsic protein, which is found which is embedded in the lipid bilayer. And now this portion is enlarged. This is and now you can see some special structures are found in the inner membrane. Membrane invaginate. Some invaginations are found in the inner membrane, and in the right angle to the long axis of the mitochondria. These are finger-like structures, which is invagination of the inner membrane, and these finger-like structures are called cristae. This is the enlarged structure of cristae. Now you can see this is outer membrane, and this one is inner membrane of mitochondria. This inner membrane invaginate and form finger-like structure. This finger-like structure is called cristae. And now in this cristae, so many small particles are attached. These are elementary particles, or ATPase or ATP synthase और coupling factor. इसके बहुत सारे नाम हैं. And in the middle portion, fluid is filled in the middle portion of the mitochondria. That fluid is called matrix, and in the fluid granules are found, and a small amount of DNA, that is circular DNA, which is without histone proteins, also called naked DNA. So in you have studied two cell organelles in which DNA is found, chloroplast and mitochondria, in which DNA is found, and they can replicate themselves just because of the presence of DNA. That is why mitochondria and chloroplast both are called semi-autonomous. Next, outer membrane. Outer membrane is smooth and freely permeable to the small and medium sized molecules and ions. It contains less amount of protein and high amount of lipid. Inner membrane, inner side of the outer membrane. Inner membrane is found. Inner membrane of mitochondria is again lipoproteinaceous in nature, and but contain more protein, and which act as carrier. And they carry the ions, cations, anions from the outer side and moves towards the inner side. So they act as carrier. And inner membrane is selectively permeable. It is permeable to small uncharged molecules like oxygen and undissociated water, but impermeable to NADPH and glucose. Space between the two membranes is called perimitochondrial space. In the inner membrane, inner membrane invaginates to produce finger-like projection. These finger-like invaginations are called cristae, and they are found at the right angle to the long axis of the mitochondria. Cristae may vary in size. They may be simple, unbranched or branched. These cristae increase the surface area up to 5 to 10 folds of inner membrane, and for more enzymatic activity during cell respiration. Mitochondria, which are found in highly active tissues having large number of cristae. And the inner membrane of mitochondria is the site of electron transport system, and the enzyme related to fatty acids synthesis and ATP synthesizing complex or oxysomes are also located in the inner membrane of mitochondria. So mitochondria जो होती है double membranous structure है. Both the membranes are consisted of phospholipid bilayer, और दोनों के आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच की स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल
स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में कुछ इन्वेजिनेशंस होती हैं, वो फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस को क्रिस्टी बोलते हैं, और क्रिस्टी राइट एंगल की होती हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे। और ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसको 5 to 10 फोल्ड्स, 5 से 10 गुना ज़्यादा एलोंगेट कर देती है, जिससे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन होती है, जिससे सेल रेस्पिरेशन ज़्यादा हो सके। समझ में आया? तो इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिचुएटेड लोकेटेड होती है, जिस जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स की वजह से और इन क्रिस्टी की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये सेवरल थाउजेंड ईटी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहाँ पर सिचुएटेड होती है। Next is, this is the structure of cristae. This one is outer membrane and this is inner membrane. और inner membrane के अंदर आप देखो, this is the invagination which is called cristae, and the space between the cristae is called intracrystal space, and this is inner membrane, and the side of the inner membrane which is found towards the cytosol is called C phase, and the side which is found towards the matrix is the fluid which is filled inside the mitochondria. तो जो साइड माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स की तरफ होती है उसको एम फेज बोलते हैं, और जो साइड बाहर की तरफ यानी साइटोसोल की तरफ होता है उसको सी फेज बोलते हैं। किसकी बात हो रही है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये वाली साइड है बाहर की तरफ है उसको सी फेज बोलते हैं, और जो ये वाली साइड है अंदर की तरफ है जहाँ फ्लूइड फील्ड है, मैट्रिक्स फील्ड है, उसको एम साइड बोलते हैं। एम फॉर मैट्रिक्स, सी फॉर साइटोसोल, and this is the space which is found between the outer and inner membrane. It is called perimitochondrial space. One more thing, in the cristae small particles are attached. These small particles are called elementary particle or ATPase or ATP synthase और ऑक्सीजोम्स और कपलिंग फैक्टर ऑल्सो। तो इतने सारे इसके नाम हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अपर हेड, मिडिल टेल और स्टॉक, एंड लोअर वन इज द बेस पोर्शन। तो इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो होते हैं इनको एटीपेस कॉम्प्लेक्स या एटीपी एंजाइम भी बोलते हैं, और एक्चुअली यही एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही एंजाइम। तो नेक्स्ट इज ATPase or ATP synthase. The inner membrane of mitochondria and the inner surface of cristae appear to have knob-like structures, knob-like projection. These knob-like projections are called elementary particles or oxysomes. These particles consist of a base and a spherical head. Spherical head is projected and consists of soluble protein that is called F1 coupling factor, which is considered as an enzyme which is responsible for the production of ATP. And during process of oxidative phosphorylation, that is ATPase, and Chance and Associated in the year 1963 used the term for ATPase oxysomes. Oxysomes for small particles present on the wall of the cristae and inner membrane, which are responsible for the complete transport of electron from substrate to molecular oxygen and generate ATP. So recent study have shown that the elementary particle or ATPase are consisted of 3 parts, upper head, middle tail or stalk, and the lower which is embedded in the phospholipid bilayer, that is base. And head is around 80 angstrom wide, tail is 30 angstrom wide and 50 angstrom long, and the base is 80 angstrom wide. Length of the total length of the elementary particle is 160 angstrom.
and in between center portion of mitochondria, fluid is filled in that portion, dense fluid material. That dense fluid material is called matrix. And in the matrix, ribosomes are found free floating in the matrix, and a small amount of DNA is also found there. Because of the presence of DNA, they are also called semi-autonomous cell organelle. And chemical composition, 70% around protein, lipid 30%, RNA 5%, 0.5%, sorry, and a small amount of DNA is found. DNA is naked without histone proteins. And ribosomes and some granules are also found floating there. This is the structure of ATPase complex, and it is also called elementary particles, oxysomes, coupling factor. And you can see this rounded structure is the head of the ATPase, and this portion is tail or stalk, and this is base, and this is lipid bilayer head portion, and this is a tail which is hydrophobic, and this is head towards the outer side and tail towards the inner side. So in this phospholipid bilayer, ATPase are embedded from the base and from the base portion and the stalk portion. Next is functions of mitochondria. And first function is mitochondria catalyze the reaction of Krebs cycle and perform oxidative phosphorylation to release high grade energy in the form of ATP. The energy of ATP is utilized by metabolic activities of the cell. Site of cellular respiration is mitochondria, which is divided into four parts: glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle and electron transport chain. पहली बात तो ये what is phosphorylation. Phosphorylation is the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. This process is found in chloroplast as well as in mitochondria. When it is found in chloroplast, it is called photophosphorylation because it takes place in the presence of light, and the site of photophosphorylation is chloroplast. Okay, and the process is called photosynthesis. तो जो ATP प्रोडक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा है. जब वो क्लोरोप्लास्ट में होता है तो उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. जो लाइट रिएक्शन में होता है साइट है क्लोरोप्लास्ट एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. लेकिन जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, और साइट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोसेस हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन. तो दोनों में अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो आप क्या बताएंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उस समय होता है. और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसकी इसके अलावा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, और सेलुलर रेस्पिरेशन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ऑक्सीडेटिव पहला हो गया ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर होती है. दूसरा हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के बाद थर्ड Krebs साइकिल, और फोर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और Krebs साइकिल ये दोनों होती हैं मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट होता है कि Krebs साइकिल को परफॉर्म करना, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, वो सारी प्रोसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही हैं. अब मैं आपको इसको थोड़ा समझा देती हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
और ये जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशंस जो होती हैं, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन, जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, वो प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है कि साइटोसॉल के अंदर फर्स्ट प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, मतलब पूरा सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म, वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना हुआ था, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन हुआ ग्लाइकोलिसिस के अंदर। Now this glycolysis is transferred to the mitochondria. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये फ्लूइड फील्ड है, मतलब ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गए, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में ये इन्वेजिनेशंस हैं, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। नंबर 3 इज क्रिस्टी। अब ये येलो वाला जो फ्लूइड फील्ड है, दैट येलो फ्लूइड इज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब डेंस फ्लूइड विच इज फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरुविक एसिड अंदर जाता है और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है। क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, इनका ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और इस प्रोसेस में प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, 2H रिलीज होते हैं। ये 2H जो मैट्रिक्स में रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं आगे जा कर के, ये वापस मैट्रिक्स में इनका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ कोएंजाइम्स होते हैं, जैसे NAD हो गया और FAD हो गया, इनको क्या करते हैं? रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन में जा कर के फर्स्ट नंबर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NAD, FAD करके कोएंजाइम्स बहुत सारे अटैच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन में ये 2H जो हैं यूटिलाइज होते हैं मैट्रिक्स से और उसको रिड्यूस करते इन कोएंजाइम को और आगे जाकर के ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन है। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी, ये बहुत डिटेल की प्रोसेस है, लेकिन आप इसको इतना भी बना करके समझाने की कोशिश करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल कैसे परफॉर्म होता है और ATP बनती है यहाँ पर। Next function is mitochondria play an important role in the oxidation of long chain fatty acids to carbon dioxide and water. तो ये फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन को ऑक्सीडाइज करती है और उसको ब्रेक कर देती है, किसमें? CO2 में और वाटर में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इनटू CO2 एंड वाटर। Third is the mitochondria are called powerhouse of the cell by sequence, and because 90% of total ATP of the cell is produced in the mitochondria. तो अभी आपने जो फर्स्ट फंक्शन देखा कि कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ऑक्सीडाइज हुए ऑर्गेनिक एसिड्स और वो ऑर्गेनिक एसिड्स में से जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको उन्होंने यूटिलाइज, उन्होंने क्या किया? रिड्यूस किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कोएंजाइम्स होते हैं NAD वगैरह, तो उसकी उस प्रोसेस में ATP का प्रोडक्शन होता है। तो सारी ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है और ATP के जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज mitochondria of several C3 plants of temperate region perform wasteful process of photorespiration in association with chloroplast and peroxisome during the daytime. अब क्या होता है कि आपने क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ा, उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में
फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी बताई थी, उसमें मैंने कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल समझाया था। तो C3 साइकिल जहाँ होता वो C3 प्लांट्स के अंदर होता, उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स बोलते हैं जिनमें कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल होता है। और उसको C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। सो दैट इज कॉल्ड C3 प्लांट्स और C3 साइकिल। अब इन प्लांट्स के अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो भी फूड फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोड्यूस होता है वो जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके 2 कार्बन कंपाउंड्स वाले उसका कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। वेस्टफुल प्रोसेस होती है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है इस पूरी प्रोसेस में। और ये प्रोसेस जो होती है 3 सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर परफॉर्म करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है 1 मार्क का, कि गिव द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो फोटो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं? तो कौन कौन से हुए? 3। ये तो आपके 4th नंबर के पॉइंट में लिखे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। और इस वेस्टफुल प्रोसेस के अंदर जो फूड फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में बनाया था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। Next is mitochondria regulate the calcium ion concentration of the cell by storing and releasing them। तो ये एक नेक्स्ट काम क्या करती है, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करती है, उनको स्टोर करके, और रिलीज भी करती है। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। तो अभी जो पीछे आपने क्रैब साइकिल देखा उसमें बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये जो है इंटरमीडिएट फॉर्म बीच में बनते हैं और वो आगे जा कर के बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। Okay, that's all for today's lecture. Thanks for watching.